Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello guys, how are you? So let us come to the point. We were reading about opinions of Islamic scholars about jihad and terrorism. We have completed first interview on the same on one question, and the next question is second question number two. मुख्तलिफ मुल्कों में जो तंजीमें जिहाद के नाम पर जिदोजहद कर रही हैं उनसे जुज़वी या कुल्ली तौर पर आप कहाँ तक मुत्तफ़िक़ हैं? Those organizations those are having efforts and doing efforts in several countries in the name of jihad until when means in which quantity in which till when you are agree with them partially or fully. Are you partially or fully agree with those organizations that are doing efforts on the name of jihad? Means we are doing jihad. So do you think those are doing jihad? Those organizations are doing jihad? Do you think or not? The first reply from मौलाना यासिन अख्तर मिसबाही मौलाना यासिन अख्तर मिसबाही says दुनिया के अंदर सरगर्म मुस्लिम तंजीमों के हर अक़दाम को न जायज़ ठहराया जा सकता है और ना ही उनकी हिमायत की जा सकती है. एवरी स्टेप्स ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन activity of Muslim organization in the world may not be said legal and may not be supported. इसी तरह मुस्लिम तंजीमों के हर अक़दाम को नाजायज़ ठहराना और उसकी मुखालफत करते रहना भी सही नहीं है. Like that we could not say illegal of every we could not say every steps of Muslim organizations illegal and opposing means opposing and saying illegal every activities of Muslim organization is not correct. Okay, means we could not support and we could not say illegal and we could not say legal and we could not oppose it. अगर इस्लाम के नाम पर कोई काम किया जा रहा है तो इस्लामी नुक्ता नज़र से उसका जायज़ा लिया जाएगा. If anything is done on the name of Islam, so it will be analyzed on the Islamic viewpoint. It will be analyzed through Islamic viewpoints. और उसके बाद ही उसके बारे में कोई फ़ैसला किया जा सकता है कि वो सही है या गलत. And after that any decision may be taken that it is correct or wrong. इस्लामी दायरे के अंदर रहते हुए मुस्लिम तंजीमों की जो भी सरगर्मियां हैं वो जिहाद के वसी माना व मफ़हूम के दायरे में शामिल है. बीइंग इनटू सर्कल ऑफ इस्लाम every activities of Muslim organization may be called jihad because of extensive meaning of meaning extensive its because of its extensive meaning that therefore jihad is entered that activity is under the meaning of jihad. Means jihad has great meaning, extensive meaning. So every efforts whether doing small works and greater works like fighting with enemies or fighting with wrong peoples is also jihad, and doing small benefits means removing stones from path is also jihad. अलबत्ता हर्ब ज़रब और क़त्ल खून रेज़ी के वाक़यात व हादिसात को आँख बंद करके इस्तिलाही जिहाद बमाना क़िताल नहीं कहा जा सकता. बट war and fighting and killing and bloodshedding may not be, and every incidents and accidents may not be said terminal jihad in the meaning of qital killing.
मुस्लिम ममालिक मुस्लिम ममालिक या गैर या मगरबी ममालिक के अंदर सरगर्म मुस्लिम तंजीमें इस वक्त अगर दुनिया के किसी हिस्से में अपनी मुखालिफ ताकत के सामने सीना सिपर हैं या उसके मफादात को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई हमला करें तो उसे अपने तहफ़्फ़ुज़ व दिफ़ा या इंतकाम की पुरजोश व इस्तक़लाल अंगेज़ कार्रवाई कहा जा सकता है, मगर इस्लामी जिहाद का नाम उसे नहीं दिया जा सकता। Any activity or any active Muslim organization into Muslim countries or Western countries, if they are doing anything in any part of the world for they are doing any work anything against the power or against any person against any power, or what are they for and what are they doing for their benefits or any for any matter for any benefits, so it may said that is done for their safety, therefore defense, and therefore for their revenge, and it was their enthusiastic and freedom provoking activity, मगर इस्लामी जिहाद का नाम उसे नहीं दिया जा सकता। But that may not be named Islamic Jihad. Means if any Muslim organization in Muslim country or non-Muslim country in Western country, what are they are doing? If they are attacking on somebody and somebody and attacking on a group of people for safety, so that will be called that war and that battle and that fighting and that deeds was for their self defense or for their revenge or for their freedom. Not that may not be said Islamic Jihad. And the next, मौलाना वाहिदुद्दीन खान says, गैर हुकूमती तंजीमों की तरफ से जिहाद बमाना क़िताल का अमल जो आज कल मुख्तलिफ मुस्लिम ग्रोहों की तरफ से जारी है वो बिलाशुबा गैर इस्लामी है। The activity of jihad in the meaning of qital that is running by non-governmental organization in several through several Muslim organization, that is undoubtedly non-Islamic. ये सब जिहाद के नाम पर फसाद का अमल है। All these are rights in the name of jihad, क्योंकि जिहाद का माना क़िताल सरतासर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बिकॉज द मीनिंग ऑफ जिहाद इज़ क़िताल एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। गैर हुकूमती तंजीम के लिए पुरअमन दावत है, न कि मुसल्लह जिहाद। एंड देयर इज़ ओनली पीसफुल कॉलिंग्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट आर्म्ड जिहाद। मौलाना शफी मोनिस सैस, मुख्तलिफ मुल्कों में जो तंजीमें दावत हक़ और फितना व फसाद के ख़िलाफ़ तालीम व तलक़ीन से काम ले रही हों, उनकी जिद्दोजहद की राह इख्तियार की हो ले रही हों या जिद्दोजहद की राह इख्तियार की हो, तो उनके सिलसिले में अलग अलग सही वाक़फ़ियत निहायत ज़रूरी है, ताकि ये देखा जा सके कि इस्लामी तालीमात ने जो शराइत व आदाब लाजिम करार दिए हैं उनका कहाँ तक पास व लिहाज किया जा रहा है। मौलाना शफी मोनिस से whatever organizations in organization in several countries, whatever they are doing for
calling peoples to divine path and to raising their arms and their voice against rights and what they are doing there, and which path they have taken for their efforts. In this matter, we had to know every aspects separately, so that we could say so that it could define those it could define that the conditions and restrictions that Islamic teachings has made it compulsory is those restrictions and the principles are followed are considered or not. If they are considering those and considering and following those principles and restrictions, that time it may be said jihad and otherwise not. मौलाना अब्दुल वहाब खिलजी से पूरी दुनिया में जुल्म जबर के खिलाफ उठाई जाने वाली आवाज़ हर कलमा गो के दिल की आवाज़ है. The voice raised against brutality in all over the world is actually a voice of every kalma reciter. Is actually heart voice of every kalma reciter. इलाही करीमतुल्लाह और दावत इस्लामी की राह में हायल रुकावटों को दूर करने की तमाम मसाई जमीला से हर इंसाफ पसंद को मुत्तफिक होने चाहिए. For the heightness of talks of Allah and is preaching and the obstacles that comes between is preaching of Islamic teachings, so the activity the every activities to remove the obstacles that comes between reaching of Islamic teachings. So those good activities will be better, and everybody should agree with those. Every justice lover should agree with those activities that is done for removing obstacles that comes between reaching Islamic teachings. The next question is जिहादी जिद्दोजहद के तहत आम शहरियों को जो निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये अमल इस्लामी नज़र जिहाद से हम आहंग है? So its meaning the mujahideen jihadi person who are making gold, who are killing common citizens under activity of jihad, is this activity according to the Islamic view is equal to jihad or not? Is this activity consonant with jihad or not according to Islamic views? Maulana यासिन अख्तर मिसबाई से गैर मुतालिक शहरी आम आदमी औरतों, बच्चों, बूढ़ों, इबादत गाहों और अवामी इदारों को हलाक व बर्बाद करने की इजाज़त इस्लामी जिहाद के अंदर भी नहीं है, तो आम जंग हमलों में ऐसी हरकतें किस तरह गवारा की जा सकती है? इवन किलिंग कॉमन पीपल, irrelated citizens, ladies, children, babies, old men, worship places and public institutes is not allowed even
even between Islamic Jihad is not allowed to destroy and to demolish during Islamic Jihad. तो आम जंगों हमलों में ऐसी हरकतें किस तरह गवारा की जा सकती है? Then how it may be possible in other battles when it is not legal and not allowed in Islam to demolish common places, public institutes, and worship places, and killing common people and ladies, babies, old men, and irrelated persons between jihad. Then out of jihad, it will be possible to do such things. मौलाना वाहिदुद्दीन खान सेस आम शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाना किसी हाल में जायज़ नहीं. किलिंग कॉमन सिटीजन्स and doing and showing brutality upon brutality upon common citizens and making them their goals is not legal in any condition, in any case. हत्ता कि मुस्लिम हुकूमत के तहत होने वाले जायज़ जिहाद में भी नहीं. until it is not illegal, even this is not legal even in legal jihad under Muslim government, means the jihad done by Muslim government, even it is not illegal with under that government. Okay, means if any Muslim government doing jihad, so the jihad done by Muslim government is not giving permission to do such things, to kill common person and illegal and innocent persons. जायज़ जिहाद में भी सिर्फ मकातिल पर वार किया जा सकता है. इन लीगल जिहाद the warrior can kill another warrior. गैर मुकातिल पर वार करने की गुंजाइश इस्लाम के उसूल जंग में नहीं. Killing non-warrior people is not possible in Islamic principles of war and battle. Islamic principles of war does not allow to kill non-warrior people. मौलाना शफी मोनिस सेस जिहादी जिद्दोजहद के तहत सिर्फ उन्हीं शहरियों को निशाना बनाया जा सकता है जो आमलन जंग में हिस्सा लेते हो या अक़लन व उर्फ़न हिस्सा लेने की क़ुदरत रखते हैं. Only those citizens may be made goal in jihad activity which who is taking part in the war practically, or who is capable to take part by his intellectual or terminal. Aqlan means intellectual and urfan means sobriquetly. यानी जवान मर्द जिन पर अहले क़िताल की इस्तिलाह सादिक़ आती है और उनके ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाई जा सकती जो अहले क़िताल ना हो. It means only young people on which the term of ahle qital falls true, and those person who does not pass under ahle qital may not be fought. मसलन औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार, ज़ख्मी, अंधे, मक़तूल आज़ा, मजनून, सयाह, खानका नशी, जाहिद, माबदों और मंदिरों के मुजाविर और ऐसे ही दूसरे बेज़र लोग. फॉर एग्ज़ाम्पल लेडीज़
babies, old men, sick persons, wounded person, blind, partial uh, body part cutting person, and mad tourist, and hermits of um, monastery, and servant of temples and worship places, and such other innocent and harmless people. Means these peoples may not be killed and may not be punished during jihad and out of jihad. मौलाना अब्दुल वहाब खिलजी सेस, जिहाद के नाम पर बेकसूर व बेगुनाह और मासूम जानों का ज़िया गैर इस्लामी अमल है. किलिंग इनोसेंट पीपल इन द नेम ऑफ जिहाद इज़ नॉन इस्लामिक एक्टिविटी. इस्लाम मैदान जंग में भी इस अम्र की शिद्दत के साथ रियायत रखता है. चाहे जाए कि आम शहरियों को निशाना बनाया जाए. एवन Islam follows this rule this rule strongly even into war field. Then how a common citizens may be made gold. Means even Islam even follow these rules during war field, that no any innocent person should be killed and should be fought during war. Then out of jihad, a common people how may be killed.